Hello bachcho, let's read this question. The ratio of the de-broglie wavelength of a proton and alpha particles will be 1:2 if there, and these are the following options which are given to us. For this, let us see first इस question का जो key concept रहेगा. And according to the given question, we can see de-broglie wavelength के लिए बात कर रहा है. So the key concept will be the same. Key concept will be equals to the de-broglie wavelength. De-broglie wavelength, and this is based on the de-broglie hypothesis. According to the de-broglie hypothesis, he said कि जो matter है that has both particle as well as wave nature, and the wave nature of the particle is quantified by the de Broglie wavelength, which can be defined as lambda is equals to h over mv. एंड जो हमारे पास लैम्डा है इसे हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. एंड दिस रिलेशन कैन आल्सो बी डिराइव्ड जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी होगा ऑफ द फोटोन दैट इज इक्वल्स टू द h न्यू, वेयर एज h जो है रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को एंड न्यू रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू c over lambda, and c will represents the velocity of the particle. And according to the Einstein equation जो हमारे पास एनर्जी होता है that is always equals to the mc square. m रिप्रेजेंट करता है मास को एंड c रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर velocity of the particle. So this energy will be equal, so hc by lambda that will be equals to the mc square. So this c and this will get cancelled. So here we will get h over lambda that is equals to the mc, and according to the formula जो हमने velocity है that we have used as v, so हम यहाँ पे replace करके लिख सकते हैं. and जैसे ही हम इसे rearrange करेंगे we will get the formula for the de Broglie wavelength, that is lambda is equals to h over mv. So this is how we have derived this formula. According to the given question, wavelength of proton and wavelength of alpha particles के बारे में बात की गई है, and they have already given the ratio for the same, that is 1/2, or we can say 1:2. So we can write it as lambda p and lambda for the alpha particle is equals to 1/2, and according to the formula this will be equals to the h over mv. So this will be the for proton and velocity of the proton particle, and जैसे हम इसे divide करेंगे we can write here h over mv for the alpha particle, so it will be mass for the alpha particle multiplication sign velocity of the alpha particle. And let us write it as in this simplification manner जो हमारे पास simplify करके अगर हम इसे लिखेंगे, so it will be this mass of alpha particles product sign velocity of the alpha particle divided by h, Planck's constant cancel हो जाएगा, and this will be m alpha v alpha divided by mp multiplication sign vp in this way. और जो हमारे पास mass of alpha particle होता है that is the 4. Mass of alpha particle is 4 unit, and mass of proton जो रहता है that is the 1 unit. So multiplication sign v alpha divided by vp, and जो हमें ये given है this ratio is 1:2. So this is given to us. So here we can simplify this जो हमारे पास vp over v alpha आएगा, which means the velocity of the proton to the velocity of the alpha particle, that will be equals to the यहाँ पर चला जाएगा हमारे पास multiplication में 4 multiplied 2 will be 8, and this will remain 1. So here we can say जो velocity of proton and velocity of alpha particle में जो ratio आएगा that will be 8
ratio 1. एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वेलोसिटी के रेशियो की बात की गई है एंड काइनेटिक एनर्जी के रेशियो की भी बात की गई है. ऑप्शन ए कहता है वेलोसिटी आर इन द रेशियो ऑफ 1:8. हियर वी कैन सी पहले प्रोटॉन के बारे में कहा गया है, देन अल्फा पार्टिकल के बारे में, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन प्रोटॉन का वेलोसिटी इज टू velocity of alpha particle. These are in the ratio of the 8:1. So जो option A है this is the wrong, but option B जो है this is correct. Now let us check the C and D. These are in accordance with the kinetic energy, and जो kinetic energy के हमारे पास formula रहता है, kinetic energy we are writing it as KE, kinetic energy, that is the half mv square. Now the kinetic energy for the proton divided by the kinetic energy of the alpha particle. So it will be half mp mass of the proton and velocity of the proton का square, half mass of the alpha particle and the velocity of the alpha particle का square. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एंड जो हमारे पास प्रोटॉन के लिए मास रहेगा एंड अल्फा पार्टिकल के लिए मास रहेगा दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, सो इट विल बी 1/4. एंड जो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो है वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट एज 8:1, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव द स्क्वायर, सो हम स्क्वायर कर देंगे. सो बेसिकली इट विल बी 8 × 8, सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 1. हेंस वी कैन से जो रेशियो आएगा दैट विल बी 16:1. अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन C option says kinetic energy है that are in the ratio of 1:64. This is wrong. And D option के according kinetic energy का जो ratio होगा that will be 1:256. This is also wrong because we have already seen जो ratio आएगा that will be 16:1. Hence we can say जो हमारे पास correct response होगा that will be option B only. So let us write the final answer of this question, which is option B. Velocity are in the ratio 8:1. So let us mark the option B as the correct answer, and option A, C and D are incorrect. Hope the solution was understandable. Best of luck.